My dear students, how are you all? मन लगा करके पढ़िए. Do not enjoy this quarantine period. Work hard. समय कम है. And many more things, many more subjects you have to study. चलिए. Class 12th Commerce. Subject Accountancy. It is chapter number 6. The name of chapter number 6 is Dissolution of Partnership Firm. It is lecture number 4. And now see, it is illustration number 5. Illustration number 5 now I am reading. You see on our screen whenever the accountancy work is done. Listen very carefully. The book should open. Pencil, pen, register should be with you. Illustration 5. A, B and C decided to dissolve the partnership firm. It means now they do not want to continue their business. They want to shut it down. ABC decided to dissolve the partnership firm. The position as at 31st March 2018. The date of dissolution was as follows. It means on next slide we will see the balance sheet of A, B and C for the date 31st March 2018. Now see the balance sheet on your screen. On right hand side there are assets. On left hand side it is liabilities. Creditors, they are of rupees 2,75,000. A's loan account, listen now very carefully. This is partner's loan account. Partner's loan account is never transferred to realization account. For the payment of partner's loan, separate account is prepared. After that, move on to capital accounts. For A, rupees 1 lakh. For B, rupees 50,000. For C, rupees 5,000. Addition is of rupees 1 lakh 55,000. In liability side, there are only 3 items: creditors, partners, loan and partners, capital accounts, balances. Assets, or move on to right hand side assets. First of all, furniture is written for 5,000. Stock is written for 1,75,000. Debtors, they are of rupees 2,40,000. Bills receivables, they are of rupees 30,000. Cash, it is of rupees 10,000. Overall, this is 4,60,000. One very much important thing, listen, cash account will never be transferred to realization account. In dissolution, we prepare separate cash account or bank account. If in liabilities bank overdraft is given to you, that bank overdraft, you have 2 options. That bank overdraft can be transferred to realization account or it can be transferred to cash or bank account in the name of to balance BG. Now see, move on to now adjustments. They share profits and losses in the ratio of A को हमने दिया 1/2, B के लिए है 3/10, C के लिए है 1/5. Rupees 20,000 of the debtors proved bad. It means these are bad debts. Rupees 20,000 are bad debts. The bills receivables were realized in full. It means whatever is the amount of bills receivable, the complete amount they have got. And the bills receivable, it whatever was the amount, it is given to you in balance sheet. The stock was realized for rupees 1,70,000. Stock का हमें मिला है 1,70,000. And then furniture C. Furniture was taken over by B at the book value. Book value का मतलब है जो मनी, जो अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में लिखा हुआ है. Furniture was taken over by B at the book value.
एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, जो हमारे खर्चे थे रियलाइजेशन के 20,000. यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. आई होप दैट ऑल द एडजस्टमेंट्स यू हैव गॉट. एक बार दोबारा देखिए. 20,000 डेटर्स में से माइनस होगा दिस अमाउंट यू कुड नॉट गेट. रुपीज 20,000 जो डेटर्स है प्रूव्ड बैड, माने दीज आर बैड डेट्स. The bills receivables were realized in full. The amount of bills receivable, it is rupees 30,000. स्टॉक था आपका 1,75,000 का. नाउ यू विल गेट रुपीज 1,70,000. फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय बी एट द बुक वैल्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 20,000 थे. जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये मानेंगे दैट दिस एक्सपेंस वाज डन बाय द फर्म. फॉर दिस इलस्ट्रेशन यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. मूव ऑन टू नाउ रियलाइजेशन अकाउंट. डेटर्स 2,40,000. स्टॉक आया आपका 1,75,000 का. फर्नीचर है 5,000 एंड बिल्स रिसीवेबल रुपीज 30,000. एंड नाउ अगेन लिसन, बहुत ध्यान से देखिए. पहले हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं एट देयर बुक वैल्यू. बुक वैल्यू का मतलब है वट एवर द अमाउंट इज रिटन इन बैलेंस शीट, दैट रिटन अमाउंट इज नोन एज बैलेंस शीट. सी देखिए, ऐसे आपने लिखा है डेबिट साइड में फर्नीचर का 5,000, स्टॉक का 1,75,000, डेटर्स का 2,40,000, बिल्स रिसीवेबल का 30,000. एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल नॉट पोस्ट द अमाउंट कैश इन रियलाइजेशन अकाउंट. कैश का पैसा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता. For this amount, separate bank account for cash or bank overdraft. Separate cash bank account are prepared. Now see the amount written on the credit side. See, creditors को book value पर हमने post कर दिया in realization account. Now see, it is by creditors 2,75,000 and listen. Now partner's loan is not written in realization account. Whenever any partner's loan is given in balance sheet, because it is now we are going to shut down our business, we have to pay, or the firm has to pay the amount to A. For this we will prepare separate A's loan account. One more thing, it is written in the question. See, nothing has been written for the realization of creditors for the amount payment of creditors. When question is silent about any liability that they have paid or not, because the matter is of dissolution, इन दैट केस क्वेश्चन बोले कि ना बोले, हमें अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है क्योंकि हम व्यापार को बंद कर रहे हैं. एनआईसी टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस पेड इट इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन. वो तो आपने लिखना ही था. बट नथिंग हैज बीन रिटर्न फॉर क्रेडिटर्स. सी द क्वेश्चन वंस अगेन. क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए कुछ नहीं लिखा. स्टिल यू हैव टू पे द कंप्लीट अमाउंट. Now move on to credit side of realization account. See, all the assets which were realized, the amount I have added and I have written in by cash. Assets realized rupees 4,20,000. The journal entry for this transaction, it is cash account debit to realization. So the amount has been transferred to the credit of realization account. See, and now furniture is taken over by B. B is their partner. Now the journal entry for this, B is capital account debit to realization. So the posting has been done by B's capital account 5,000.
When the addition was done, debit side was more. When debit side is more, the firm is suffering from losses, and loss is of rupees overall rupees 45,000. By loss transferred to A's capital account 22,500. Then B's capital account 13,500. C's capital account 9,000, and the addition, that is 45,000. And now listen the journal entry for this loss. Journal entry is A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to realization. Now listen, their partner's capital account has been done debit. When partner's capital account is debited, it is very clear that the firm, the partners, they are suffering from losses. Now move on to question 2. I have taken some certain conditions in which you will have to understand the journal entries. Question 2. Give necessary journal entries for the settlement of partners loan जिस समय पर डिसोल्यूशन फर्म का हो रहा है. Give necessary journal entries for the settlement of partners loan at the time of dissolution of the firm under the following cases. कौन कौन से केसेस हैं देखते हैं. चलिए, केस नंबर 1, लोन फ्रॉम मनोज. मनोज इज द पार्टनर. लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख है. क्रेडिट बैलेंस है मनोज के कैपिटल अकाउंट में 40,000. एंड नाउ लिसन, वट एवर इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ मनोज कैपिटल अकाउंट, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट मनोज को हम पैसा देंगे, उसका अलग से लोन अकाउंट बनेगा. जर्नल होगा मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख. एंड सी, बैंक क्रेडिट हुआ, इट मीन्स फर्म हैज पेड, एंड द नरेशन दैट इज रिपेमेंट ऑफ हिज लोन, एंड लोन वॉज ऑफ रुपीज 1 लाख. यहाँ पर हमने कैपिटल को देखा ही नहीं. वी विल नॉट सी कैपिटल, वट एवर इज द अमाउंट. उसका 1 लाख का लोन था. दैट लोन हैज बीन रीपेड बाय द फर्म. केस नंबर 2, लोन फ्रॉम मनोज, इट इज ऑफ रुपीज, अगेन मनोज इज अ पार्टनर. लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर रुपीज 1 लाख. मनोज से डेबिट बैलेंस है, देखिए नाउ इट इज डेबिट बैलेंस 70,000. नाउ व्हाट विल हैपन, सी, मनोज का लोन था 1 लाख का. मनोज लोन अकाउंट डेबिट रुपीज 1 लाख. देन द डेबिट बैलेंस हैज बीन पोस्टेड, सी, टू मनोज कैपिटल अकाउंट 70,000. जो डेबिट बैलेंस था वो हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया. टू बैंक अकाउंट 30,000. जो बैलेंस था दैट हैज बीन पेड. हिज लोन एडजस्टेड अगेंस्ट डेबिट बैलेंस. आई होप बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, सभी को समझ में आ रहा होगा. His loan has been adjusted against the balance. डेबिट से देखिए पोस्टिंग हमने किया, क्रेडिट हुआ 1 लाख. द फर्म हैड टू पे 70,000. उसका क्रेडिट में आया 30,000, हमने उसको और दे दिया. सो द नरेशन इज हिज लोन एडजस्टेड अगेंस्ट डेबिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस हैज बीन रीपेड. सी, इट इज केस नंबर 3. लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर फॉर रुपीज 1 लाख. मनोज कैपिटल अकाउंट, इट इज डेबिट बैलेंस, इट इज ऑफ रुपीज 1,25,000. इट इज केस नंबर 3. एंड नाउ मूव ऑन टू जर्नल एंट्री. मनोज लोन अकाउंट डेबिट. मनोज का लोन अकाउंट आपने 1 लाख रुपीज का सेटल किया है. बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 25,000 टू मनोज कैपिटल अकाउंट, इट इज रुपीज 1,25,000. एंड नाउ मूव ऑन टू नरेशन. बैलेंस इन मनोज लोन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट एंड द डेफिशिएंसी ब्रॉट. देखिए 1,25,000 जो क्रेडिट था पैसा, उसको डेबिट किया. मनोज का लोन था फॉर रुपीज 1 लाख. 25,000 rupees they are paid to the firm by partner. So the journal entry is Manoj's loan account debit. It is 1 lakh. Bank account debit
it is 25,000. To Manoj's capital account, it is 1,25,000. चलिए जी, listen to your homework you have to do chapter number 6, solve questions. Only 2 questions you have to solve, 10A and question 11. These are only 2 questions, those you have to do. So be sincere, be hard worker, be a hard working student. Thank you so much. God bless you all.